अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी में। आज का व्लॉग हमारा है स्वात का स्टडी ट्रिप है। अस्सलाम वालेकुम, आइए हमारे साथ। In the first part, this is called Ambela Granite Complex. When we use the word complex, it means that it's not only a single rock, right? There is a different episode of magmatic cycle. It's no more a complex because the geology is very well established due to the multiple research group has done very nice work on these rocks. So it's a very well understood geology of the area. But in spite of this, we will call it a granite complex, right? I will make a sketch of this area, and I will take you back to Permian. What was in the Permian? In the Permian, we were having some different sort of continent, and that supercontinent was called Gondwana land. Okay? And then during the Permian time, in Gondwana, rifting started. And you know, when the rift starts, crustal melting is also taking place because the pressure release, the heat transfer from the mantle towards the crust, right? And it starts melting. So as you know that if we have the basement rock of the Indian shield rocks, which were Precambrian Tanawal quartzite, right? This one is the youngest, ठीक है? And अगर आप देखें तो ये जो granite has become more mafic type. It means that we are going closer towards the mantle source, right? So if there is a fracture because there was a rift, and the rift we have fracture, right? Like it's a normal sort of tectonic setup. So when there is an extension, the crust become more deeper and deeper, and the mantle is coming closer. So the first thing which produced because of the crustal melting, the alkali granite and then granite, and then it is followed by the nepheline cyanide, right, or cyanide, which are the intermediate rocks, and this one is dolomite. Dolomite dike. Dolomite dike is equivalent of the gabbro.
that is equivalent of basalt. If it erupts, right, you will call it basalt, right? If it is very coarse grain, right, then you will call it gabbro. ठीक है? इसमें composition बहुत कम चेंज होता है, मगर डायनेमिकली मैनर जो है वो हो जाता है। ठीक है? तो अगर आपको याद है, हमने एक डायग्राम ड्रा किया था इसी तरह डायग्राम, और वो डायग्राम ये था, यहाँ पे हमारे पास जो बहुत डीप सीटेड रॉक्स है, उसको अगर वो हम डायनेमिकली मेटामॉर्फोज करते हैं, उसको हम कहते हैं माइलोनाइट, और नीचे जो है नाइसिस है, और ऊपर जो है ये फिर सीडोटेकेलाइट या ब्रेक्शिया जो है। ठीक है? तो वी विल कॉल इट ब्रेक्शिया। ठीक है? यू नो अबाउट द ब्रेक्शिया, यू विल सी सम क्लास, a different broken class. Over here we are in the zone of almost myelonite. Curiosity da se dava شوی د شیر زون دا وایي شوی alignment دا بلیک چی شوی. वो है Ambela Granite. There are multiple. There are huge number of xenoliths. They are preserved within this. Yeah, this one is relatively bigger. Yeah, this is why I took. You can see this intrusion. Yes, sir. Okay, you can see this intrusion. This is almost applied. Okay, applied जो है very fine grained को हम applied कहते हैं. ठीक है? So that is applied, and you can see इसका जो वो है, जो अपना फैब्रिक है, इसने इसको क्रॉस कट किया इस फैब्रिक में. ठीक है? अब अगर आप देखें, ये फाइन ग्रेन है, you can see here fine grain, और दरमियान में आपके साथ almost coarse grain हो जाता है. Quartz. ठीक है? Yes, sir. Why it is coarse grain? Because due to the transformation of heat. ठीक है? जो heat है यहाँ पे easily loss हुआ है, तो इसने crystal नहीं बनाया. It's comparatively fine grain. जब आप उसके तरफ जाते हैं, core के तरफ, so you can see the crystals are very larger. So it's a sort of apletic या applied जो है एक dike है within this one. So that could be it's surely younger than that dolomite dikes. ठीक है? We have seen alkali granite, plus granite, applied granite, and then we have seen dolomite dike. Right? This one is the second intrusion within the आप समझे कि within the rift zone, या जो rift था, Permian rift, उसी में से ये second phase of crystallization है. ठीक है? इसमें ये होता है कि इनकम्पेटिबिलिटी इस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसमें एक लड़का जो वो इनकम्पेटेबल है, वो कहता है कि यार मैं किस तरह वॉक करूँगा, एंड व्हाई शुड गो ऑल द वे बाय फुट देयर, और वो रिक्शे में बैठ के चला जाता है आपसे. दिस गाय इज इनकम्पेटेबल. ही डजंट वांट टू टेक द स्ट्रेस, ही डजंट वांट to walk under the sky, under the sun, और ये सब कुछ वो escape करता है. तो this one is incompatible. ठीक है? तो जब ये मैग्मा बनता है, जब partial melting होता है, partial melting में ये है कि you have some melting, right? तो उसमें potassium जो है, potassium start thinking कि why I should stay here, why shouldn't I go in the melt? तो potassium जो है वो melt के साथ चला जाता है. ठीक है? और सिलिका भी मेल्ट के साथ चला जाता है. ऑलमोस्ट अ लिटिल बिट एल्यूमिना भी उसके साथ चला जाता है. तो आपके पास जो इनकम्पेटेबल एलिमेंट है वो ग्रेनाइट बना लेते हैं. ठीक है? जिसमें फेल्डस्पार हो गया और ये हो गया बाकी चीज़ें. तो क्या हो गया कि जो मैग्मा होता है वो डिप्लीट हो जाता है किस चीज़ में?
it depletes in potassium and it depletes in silica. ठीक है, तो मैग्मा ने तो फिर भी तो क्रिस्टलाइन तो होना है, उसने तो सॉलिडिफाई होना है। तो जब ये सॉलिडिफाई होगा तो मैग्मा के पास सिर्फ कंपैटिबल एलिमेंट रह जाता है और वो है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है कि सोडियम लिटिल बिट इट टेक्स अ लिटिल बिट पोटाशियम, सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका के साथ रिएक्शन करके वो नेफिलीन बनाता है। ठीक है, तो जो मेल्ट है, क्योंकि मेल्ट तो किसी चीज़ से बना है, उसमें ज़्यादातर सिलिका चला जाता है और साथ वो अपने साथ पोटाशियम को कन्वेंस करके पोटाशियम को भी लेके जाता है। ठीक है, तो इस रॉक में जो 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 नीचे जो वो होता है, जो मेल्ट होता है, उसके पास फिर सोडियम रह जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो जब सोडियम रहता है, आप सोडियम दो चीज़ें बना सकता है, या तो वो नेफिलीन बनाएगा या वो प्लेजोक्लेज बनाएगा। ठीक है, तो एट फॉर्म नेफिलीन। ठीक है, तो इसलिए इसको नेफिलीन साइनाइड कहते हैं। साइनाइड को इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लेस देन 5% क्वार्ट्ज है, नॉट सिलिका, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है वो अम्बेला ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स ने सारा लिया है। क्लस्टर्स ऑफ ग्रेन्स नजर आएंगे। These are basically cyanides and they are quartz alkali cyanides. कम की alkali फिट्स बारो सर हूँ लगे माउंट। ठीक है जी, ये जिस आउटक्रॉप के ऊपर मैं खड़ा हूँ, it is enriched in fluid bearing minerals। ठीक है, तो ये के तकरीबन इसमें 25% तक इसमें इसकी फोटोग्राफी ऑलरेडी की गई है। तो राउंड अबाउट 25% इसके अंदर नेफलिन है। यू कैन कॉल इट प्योरली नेफलिन साइनाइड। एवरीथिंग इज शेयर्ड। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बताया कि जब अपर क्रस्ट में कोई भी डिफॉर्मेशन होता है, वो रॉक्स को शटर करते हैं, ब्रेक्शिएटेड करते हैं, या उसमें कोहेजन नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो कोहेजन। यू कैन रिमूव ईच पेबल इफ यू वांट, यू कैन रिमूव ईच पेबल वेरी इजीली। So this is the good example of brittle deformation। और आप इस वेन को देख सकते हैं, कोई वेन इस तरह गया है, कोई इस तरह गया है, इसको हम कहते हैं स्टॉप वर्क। ठीक है, सो दैट्स अ स्टॉप वर्क ऑफ द वेन्स के मुख्तलिफ डायरेक्शन में गए हैं। Formation, which is Precambrian in age. Probably we won't see this one here, and then it's followed by the Swat Granite Igneous, right, which is Cambrian in age, and these were the basement rock for the Tectonic ocean or for the Tectonic sediment. These are all Tectonic sediments. Sediments are better sediment that you see. These are the Tectonic sediments. This one is marble, and for sure it was limestone. Okay? And limestone get deposited in the ocean. So that was the ocean. Which ocean was that one? That ocean was a Paleotectonic ocean or New Tectonic ocean. Okay? So on the top of the Swat granite, we have this formation is termed as Tuma formation. Right? Tuma formation. That is Permian area. अगर आप देखें इसके आपको इट्स कंसिस्ट ऑफ मार्बल। ठीक है, इसमें फ्लोकोफाइट मार्बल भी है, जिसमें माइका है। ठीक है, और इसमें ट्रेमोलाइट मार्बल भी है, जिसमें ट्रेमोलाइट इज एम्फीबो। ठीक है, नो इफ यू हैव फ्लोकोफाइट, इफ यू हैव ट्रेमोलाइट, व्हाट डज इट शोज? इट शोज सम कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, फ्रॉम समवेयर इट गॉट सिलिका, या इसका अपना सिलिका था जो कि रिएक्शन उसने की है मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, या किसी आयरन के साथ रिएक्शन किया है और उससे ट्रेमोलाइट बना है, या इसमें कहीं से पोटाशियम आया है। पोटाशियम, यस, दिस इज यस ऑटोमेटिक। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब ये जो मार्बल बना है, उस तरह मैंने आपको बताया कि मार्बल नॉर्मली कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म। अब यहाँ पे अगर हम ग्रेनाइट इग्नियस को देखें तो वो तो कैम्ब्रियन एज के और ये पर्मियन एज के। तो कैम्ब्रियन एज के जो इंट्रूजन है, इट कैन नॉट मेटामॉर्फोज टू और इट कैन नॉट काज कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म। सो व्हाट एल्स डिड दिस जॉब? ठीक है,
ये जो जॉब है ये जिसने किया है, दिस इज द स्वाट टूरमरीन ग्रेनाइट या मलकंड जो ग्रेनाइट है, जो यंगर ग्रेनाइट है, जो 47 बिलियन ईयर इन द टेक्टोनिक ह्यूज बेल्ट प्रोड्यूसिंग और क्रस्टल थिकनिंग हो गया, ठीक है। इंडियन प्लेट का जो ये जो पार्ट था, ये क्रस्टल थिकनिंग इसका हो गया बिकॉज ऑफ कोलिजन नॉर्मली 55 और 56 सेकंड वो हुआ है। उसके बाद क्रस्टल थिकनिंग और क्रस्टल थिकनिंग की वजह से टेक्टोनिक बेल्ट हुआ है, टेक्टोनिक बेल्ट की वजह से जितना भी लाइम होगा वो कन्वर्ट हो गया है मार्बल, ठीक है। सो दैट्स टू ऑफ फॉर्मेशन। Formation, right? So Kashala is also a calcareous marble, but this one is calcite marble or dolomite marble, ठीक है, या प्योर मार्बल है। तो आप सराउंडिंग में जितने भी इससे जो क्वेरीज हो रहे हैं, जो मेयर मार्बल है, वो इतने घर से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। Okay, over here you can see a very clear contact between Swat tourmaline granite and the Marghuzar formation, right? This is the Permian part of the Swat stratigraphic जो अल्पुरे ग्रुप मेटा sediments का जो Permian part है वो Marghuzar formation है, ठीक है? You can see here a very important thing. The Marghuzar formation is dipping in this direction, right? And these rock, if you see the foliation, they are also dipping in this direction. And on the top of this one is the Cambrian granite, Swat Cambrian granite, right? Porphyritic granite or granitic gneiss. So if you have this situation, like this was the normal situation where that part is the Swat granitic gneiss, right? Followed by the tourmaline granite, which has metamorphosed all these things because it is in a tectonic melt, and it has given a lot of heat to limestone for marbleization. So what happened here? That's the situation, right? Like now you see that thing over here. आपका जो मरगुजार फॉर्मेशन है, that is dipping in this direction. So मरगुजार फॉर्मेशन जो है ये डाउन है, ठीक है, इट्स फॉलोड बाय द टूरमरीन ग्रेनाइट और उसके बाद जो है कैम्ब्रियन स्वात ग्रेनाइटिक ग्नाइसेस है, ठीक है। सो दिस इज इन ओवरटर्न सीक्वेंस, समझ आ गई ओवरटर्न सीक्वेंस की। ये जो पार्ट है इसका ये ओवरटर्न हो गया इसी तरह, ठीक है। तो टॉप पे आपको जो है डाउन आपको ये नज़र आ रहा है। अब अगर आप इसमें ये देखें, these things, right, they belong to the same tourmaline granite, right? These are all tourmaline granitic pegmatites within the Marghuzar formation. और Marghuzar formation जो है, it's a hornblendite, right? It's amphibolite and it has garnet mica schist and a little bit some marble in it. ठीक है? So that part of the sulfuric group metasediment is mafic और metamorphism की वजह से amphibolite बना है, ठीक है, या hornblendite बना है। अब उस साइड पे अगर आप देखें, you can see here Swat tourmaline granite and you see tourmaline. So whenever you see tourmaline in rocks, it shows you the crustal melting, क्योंकि इसमें बोरान है, ठीक है, इसके मेन कंपोजिशन में, और बोरान जो है ये अपर क्रस्ट में, इट्स अ लॉट इन द अपर क्रस्ट। सो जब टेक्टोनिक स्ट्रेसेस आ जाते हैं, इसका इंटरफेस जो था ग्रेनाइटिक इंटरफेस और ये मरगुजार जो मरगुजार फॉर्मेशन है, इसके इंटरफेस पे एनाटेक्टिक मेल्ट हुआ है, ठीक है। और हमने इसको वो किया है, डेट किया है, एंड वी पब्लिश इन जियोलॉजी। इसका जो वो है एज है दैट इज 39 मिलियन,
कोलिजन जो हुआ है ये 55 और 50 के दरमियान हुआ है और इसका एज जो है ये 39 है। तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये जो स्वात टूरमलिन ग्रेनाइट है इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक मेल्ट ऑफ द क्रस्ट। समझ आ गई? तो हमारी जो स्ट्रेटिग्राफी है ऑलमोस्ट हमने वहाँ से आके डूमा फॉर्मेशन देखा, फिर उसके बाद जो है निकनईगर फॉर्मेशन देखा। हमने 2 स्किप किया, अभी तक वो हमें नज़र नहीं आए क्योंकि वो उस साइड पे है। ये ओटर्न सीक्वेंस है, तो दैट वाज देयर, हमने उसको मिस किया है। जो उसमें था कशाला फॉर्मेशन और सिद्धू फॉर्मेशन, ठीक है, वो हम वी विल सी इट टुमारो। Granite or Swat granitic gneiss, ठीक है? That is basically tourmaline rich granite, and this one is called Swat granitic gneiss, right? It's Cambrian in age, so this is one of the oldest unit in the area. These are not related to that episode, and you can see this mega porphyritic texture. Granitites are formed, let's say, from magma start crystallizing, ठीक है? Second stage में फिर pegmatites बनते हैं और फिर third stage में hydrothermal solutions become operative and they are forming hydrothermal deposits like the porphyry copper systems, ठीक है? Like the epithermal, mesothermal precious metal system, that is going to be the late stage. So large scale पे pegmatite bodies